Okay. So, good morning, everyone. Let's start with the discussion now. Today is 11th of May 2026, and we have a few important news items that we will be discussing in today's newspaper. And post our discussion of the newspaper, we will also solve a few practice questions, and these questions will be purely based on the CLAT pattern. So, today's we'll have a fun session. So, let's start with our discussion now. So this is the first news item that we have with us. So all the speculations, all kind of political uncertainty that was going on in Tamil Nadu is now at a halt, and the reason is yesterday 52-year-old Joseph Vijay took oath as the chief minister of Tamil Nadu, and this oath was administered by the governor of Tamil Nadu, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar. And along with Mr. Joseph Vijay, 8 cabinet minister also took oath for the office. So this is one important news item, and we have a lot of important articles related to this particular news item in today's newspaper, covering the constitutional aspect involved with the powers of the governor related to the appointment of the chief minister, right? And whether whether the discretion is given to the governor or not, all those aspects have been discussed. तो हम उसको अभी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम एडिटोरियल वाले सेक्शन और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में पहुंचेंगे. And this is the second news item, and it was a no-brainer that Himanta Biswa Sarma will take oath as the chief minister of Assam. तो ये तो एक no-brainer था, तो ये भी oath ले लेंगे as the chief minister of Assam. Now we'll move to the next news item. Amid global uncertainties, Modi urges people to cut off fuel use, avoid foreign travel. Right. So you will find this to be relevant in the national context, but academic relevance is news item का इतना इसलिए नहीं है क्योंकि this is basically a kind of रिक्वेस्ट और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है. इन्होंने एक स्पीच दी हैदराबाद में, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने वहाँ से लोगों को बोला कि भाई आप जिस तरीके से वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फ्यूल क्रंच इतना, सप्लाई क्रंच इतना ज़्यादा हो गया, सो द पीपल शुड इंश्योर दैट कि वो क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे उसको मिनिमाइज किया जा सके. एंड फ्यू ऑफ द सजेशंस मेड बाय मिस्टर मोदी, उसमें से सबसे पहला ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना यूज़ कर सकते हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए. अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं आप मेट्रो में ट्रैवल करिए. फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करिए, वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए. सो दीज आर द वेरियस सजेशंस मेड बाय मिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज एड्रेस. So again, you can read this article, but you will find nothing relevant in the academic for the academic perspective. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे जिस तरीके का सिनेरियो था कि लोग घर पे रह करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, तो वही सारे तरीके के सजेशन है. नथिंग न्यू, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो इस पे हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है. अब लोड कहाँ लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो लोड लेने वाली न्यूज़ आइटम अभी हमारे पास में आ रहा है. Now, a signal film made by Vijay director goes to Khan's Academy. Again, this might be relevant for AILET and one-day law entrance test. Apart from CLAT के अलावा जो सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स और जीके सिलेबस का पार्ट है, उन एग्जामिनेशन के लिए ये न्यूज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो विशाखापट्टनम बॉर्न फिल्म मेकर सागी श्री हरि वर्मा शॉर्ट फिल्म सिग्नल. सो फिल्म का नाम क्या है? सिग्नल. इट इज entirely shot on iPhone. तो हो सकता है कि in examination they might ask this question or they might phrase this question in a certain way that the Indian short film Signal was shot on which device. So this entire movie was shot on the iPhone. So that is one important point. और इसे कांस फिल्म में क्या किया जाएगा? कांस फिल्म फेस्टिवल में इस शॉर्ट फिल्म का प्रीमियर होगा. अब इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी याद रखिएगा, सागी श्री हरि वर्मा. Right, so this is one important news item. It might be relevant for your AILET or other one-day law entrance test apart from CLAT. So इसे भी हमें याद रखना है. Now we'll move to the next news item. हम देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के टाइम पे वो यही रहेगा
कि हम सिर्फ वो न्यूज़ आइटम्स डिस्कस करें जिनका आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंस है। जिनका आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, उनमें बहुत डीप डिटेल डिस्कशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लास 12th के बाद में होता है, राइट। सो हमें बहुत डिटेल डिस्कशन जो होता है कि जिसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, हम उस एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीपल चॉइस MCQ बेस्ड एग्जाम है, राइट। हमसे सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे, हमसे कोई ऑब्जेक्टिविटी या सॉरी सब्जेक्टिविटी या मेंस बेस्ड आंसर्स हमसे नहीं पूछे जाएंगे, राइट। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नाउ अगेन दिस न्यूज़ आइटम इज रिलेटेड टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट in 2021 with the project cost of 72,000 crore rupees. So recently क्या हुआ था स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट was approved by the National Green Tribunal. National Green Tribunal gave a clean sheet to this particular project, and after National Green Tribunal gave a clean sheet to this particular project, a lot of news items or a lot of articles were written on this particular topic, citing different reasons that why this particular project is a threat to the ecological balance of the Great Nicobar Island, right. So day before yesterday we had a lot of discussion about the Great Nicobar project, that the idea was conceived in 2021. The project cost of and the project cost was 72,000 crore rupees. The idea was conceived by Niti Aayog, right. The project will span in an area of 166 square kilometer. Currently the project cost is 92,000 crore rupees, and out of this 166 square kilometer, जो 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो रिजर्व्ड एरिया में फॉल करता है, रिजर्व्ड एरिया। और ये रिजर्व्ड एरिया है डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। और ये दो डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन कौन से जिनकी हम बात कर रहे हैं, शॉम्पेन कम्युनिटी एंड निकोबारीज ट्राइब। सो ये दो ट्राइब्स हैं जिनके बारे में, जिनके लिए एरिया रिजर्व किया गया, शॉम्पेन एंड निकोबारीज। सो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? सो द रीसेंट डेवलपमेंट इज दैट द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज रिटन अ लेटर to the Union Environment Minister, Mr. Bhupendra Yadav, and he has demanded that the report which was given by or which was submitted by the high powered committee, and this particular high powered committee was constituted on the directions given by the National Green Tribunal. This particular document should be made public. This document should be provided in the public domain so that each and every stakeholder can visit the document, that what are the various suggestions or the findings of this high powered committee which was constituted on the directions of the National Green ट्रिब्यूनल, राइट। सो सोनिया गांधी ने भी इस पे 2-3 आर्टिकल लिखे थे फरवरी मार्च के महीने में। सो अभी हमें बस ये याद रखना है कि दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, गिवन द रीजन दैट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और हम पिछले 4-5 साल से अगर आप क्लैट का पैटर्न देखेंगे तो जिन चीज़ों को न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनमें न्यूज़पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो चीज़ें हमेशा न्यूज़पेपर में आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ जजमेंट, state of Tamil Nadu versus governor of Tamil Nadu and others, right. The judgment was given in the month of April 2026 by the Supreme Court of India, and post that judgment a lot of articles were written in the newspaper. Almost 100 to 150 आर्टिकल्स वर रिटन, 150 आर्टिकल से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए थे, राइट। और फाइनली लीगल रीजनिंग के सेक्शन में वो पर्टिकुलर पैसेज आपसे पूछ लिया गया था, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ द न्यूज़पेपर इज गिविंग अ लॉट ऑफ स्पेस और अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू एनी पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम, देन दैट न्यूज़ आइटम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो विल कीप दैट थिंग इन माइंड। सिर्फ आज के लिए नहीं, हम आगे कोई भी अगर आर्टिकल अगर हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे। और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज द पावर ऑफ द गवर्नर व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, IORA, right, Indian Ocean Rim Association, right. So we'll discuss about Indian Ocean Rim Association as well, that what are the different aspects related to Indian Ocean Rim Association which might be relevant for your examination, right students. So let's start with the discussion now. Navigating maritime security in the wake of the war in West Asia will be at the top of the agenda as India chairs the 23 nation Indian Ocean Rim Association
with the leaders summit expected next year, says the organization secretary general संजीव रंजन. राइट, सो अब हम यहाँ से क्या क्या चीजें पिक आउट करना शुरू करते हैं. पहले तो हम स्टैटिक एस्पेक्ट जो इस न्यूज आइटम का हम वो डिस्कस कर लेते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द discussion now. Indian Ocean Rim Association. IORA. Now, when we talk about Indian Ocean Rim Association, so this organization was formed after the idea, basically, the idea was conceived by a very famous leader, Nelson Mandela. The idea was suggested in 1995, and finally, the organization was established. Finally, the organization was established on 7th of March 1997. Now, the next important point that we have to discuss, where is the headquarter of this particular organization? So, the headquarter of this organization is in Ibain. Ibain is a city in, where is this city? Ibain? Anyone? Where is this city located? So, the city is located in Mauritius. राइट, सो दीज आर द फैक्ट्स जो स्टैटिक एस्पेक्ट के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th of March 1997, एंड इंडिया sorry, this particular organization will complete 30 year in 2027. This organization will be 3 decades old in 2027. Now moving on to the next important point, how many members are part of this prestigious organization? So 23 members. India is one of the most important member of Indian Ocean Rim Association, IORA. One of the most coveted and important member is India. Now moving on to the next point. अब इसमें दो observer states भी हैं, दो observer states हैं या दो observer, two observer members. So two observer members कौन कौन से? So let's start with two observer members. तो सबसे पहला observer member है Indian Ocean Research Group. Indian Ocean Research Group. Indian Ocean Research Group. IORG. Indian Ocean Research Group is one of the observer member, and the second observer member is Western Indian Ocean. Western Indian Ocean थोड़ा सा नाम बड़ा है, so I have to refer to my notes. Western Indian Ocean. Western Indian Ocean Marine Science Association. Marine Science Association. So these are the two observer members of Indian Ocean Rim Association. The first one is Indian Ocean Research Group, IORG, and the second one is Western Indian Ocean Marine Science Association. So these are the two observer members. Now we'll move to this next important part, that who is the Secretary General of this particular group. So अभी हमने Secretary General के बारे में डिस्कस किया था, and Secretary General is संजीव रंजन, right? So who is the Secretary General? I'll change the shade of the pen. तो आप लोग प्लीज इसे याद रखिएगा. So Secretary General is संजीव रंजन. So students, this is about the static aspect of Indian Ocean Rim Association. Date of establishment is 7th of March 1997. Members कितने हैं? 23 members हैं. Where is the headquarter of this organization? Abyei, Mauritius. The idea was conceived by, or this particular organization was a vision of Nelson Mandela. Then this particular organization have two member states or two observer members. The first one is Indian Ocean Research Group, and the second one is Western Indian Ocean Marine Science Association, right? So this is the static aspect of this particular news item. Now let's come back to the current discussion.
तो करंट में क्या क्या चीजें रेलेवेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? So basically, what is the relevance of this particular group, or why this particular group was created? The first hand, let's start with this particular question, that why this particular organization was created when we have so many international organizations. Why one more international organization was created? So to increase or to strengthen the economic cooperation, and we'll be solving a few questions at the end of this discussion, so please बहुत focused रहना है, as to strengthen the economic cooperation in this region. And given the current international situation, or given the current international conflicts that are going on, specifically if we talk about the West Asia conflict, जो ईरान, इसराइल, लेबनान, वो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना, उसकी वजह से जितनी भी ये इंडियन ओशन और जितनी भी वेस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो रेलेवेंस वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of this particular organization at this point of time is to reduce the impact of West Asian conflict on the on in this particular region. Right now, so basically, India will host the summit next year, and at this point of time, India is the chair of this particular organization, and the Secretary General is Mr. Sanjeev Ranjan. Right now, Mr. Sanjeev Ranjan has given a lot of emphasis on the increase in the prices of the crude oil, and how this particular increase in the prices of crude oil is actually impacting the economic situation of the member states. Right, so this is a common discussion, you will find it everywhere, that whenever we talk about the current geopolitical situation, every international organization is facing same kind of problem, that is the rise in the prices of the crude oil because of the West Asian conflict, and specifically closure of Strait of Hormuz, which is responsible, or which actually controls 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई. राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा, अभी हम एटलीस्ट इन 2026 जब भी हम किसी मेजर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करेंगे, तो उसमें वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट विल प्ले अ मेजर रोल. और हमने फर्स्ट पेज पे अभी इसका डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी है सेड कि प्लीज आप लोग वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमम यूज करिए, फॉरेन ट्रैवल अगर हो सके तो अवॉइड करिए. फॉरेन ट्रैवल इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. The governor who forgot his job. The article is written by two senior advocates of the Supreme Court of India, and one of them is Rajiv Dhawan, and the other advocate is Sanjay Hegde. Right. So students, one of the most important things related to the office of governor is that how much discretionary power does governor holds. गवर्नर के पास कितनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है? क्या गवर्नर के पास में हर एक एस्पेक्ट में डिस्क्रिशनरी पावर होती है? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर होती है, हमेशा याद रखिएगा, व्हेन अ पर्टिकुलर बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, फॉर हिज और हर असेंट. देन अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर हैज द डिस्क्रिशन वेदर टू गिव द असेंट और not. That is one major area where the governor holds a lot of discretion. But when it comes to the appointment of the chief minister, right, does the governor have discretion कि वो किसको अलाउ करेंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी इलेक्शंस के बाद की बात करते हैं, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो हम उसके बाद की जब बात करते हैं, उसके बाद की सिचुएशन की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अभी जो करंट इशू चल रहा था उसमें क्या था. The founder of Tamilgavethri Kajigam, Mr. Joseph Vijay, visited the office of governor for 4 times. And every time the governor of Tamil Nadu, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar, उन्होंने बस एक ही चीज डिमांड की कि प्लीज प्रेजेंट अ लेटर और प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट विद द साइन ऑफ 118 MLAs. मैं तभी आपको इनवाइट करूंगा चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. Now this is the most important question that we have with us, that proving majority is one such aspect
जो फ्लोर ऑफ राजभवन में आपको नहीं करना होता है. गवर्नर कैन नॉट डिमांड टू प्रूव द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द राजभवन, बट the majority has to be proven on the floor of the house. This is the first important fact, or this is the first important provision which the governor should always keep in his mind, that you cannot ask the upcoming chief minister कि भाई आप मेरे को राजभवन में ही 118 MLAs का साइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए, because that is something which has to be done on the floor of the house. So that's why the title of this article is the governor who forgot his job. So when we talk about the appointment of the chief minister of any particular state, this is specifically given in Article 164, that the governor will appoint the chief minister. Right. Now, a very important reference has been also given in this particular article, and that is the reference of S.R. Bommai, and also the various commissions which were formed to strengthen the interstate relations. Right, interstate relations को strengthen करने के लिए बहुत सारे जो commissions form किए गए थे, उनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत reference दिया गया. Right, तो सरकारिया commission, पुंची commission, we'll discuss all those things. But coming back to the important point, good morning everyone. So let's stick to the discussion now. Today will solve questions as well. तो अभी आप लोगों को फटाफट उन questions के आंसर भी करने हैं. Now when we talk about state of Tamil Nadu, वापस हम एक बार रिविजिट कर लेते हैं सारे फैक्ट्स को फटाफट. टोटल असेंबली का स्ट्रेंथ इज 234. तमिलगा कजिगम ने सिक्योर की थी 108 सीट्स. मेजॉरिटी के लिए आपको 118 सीट्स चाहिए होती हैं. अब प्रॉब्लम ये थी कि जोसेफ विजय ने 2 जगह से इलेक्शन कंटेस्ट किया था. इसका मतलब क्या, इफेक्टिवली तमिलगा कजिगम के पास जो स्ट्रेंथ थी वो थी 107 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. राइट, उनको 11 मेंबर्स का और सपोर्ट चाहिए था अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. राइट, अब हम और आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है जब भी हम व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, the governor's functions on the morrow of an election is narrow and well settled. He is to identify the person most likely to command the confidence of the house and invite that person to be sworn in. He is not a returning officer. He is not an arithmetic tutor. He has no business demanding the chief minister designate, produced, assigned a muster roll before allowing him to take the oath. So basically the primary point which is made by the authors of this article is कि भाई गवर्नर का जो फंक्शन होता है, गवर्नर का फंक्शन यही होता है. और गवर्नर का फंक्शन क्या होता है कि जो अगर गवर्नर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में सफिशिएंट नंबर ऑफ सपोर्ट है या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सपोर्ट है, तो गवर्नर को उसको इनवाइट करके उसको ओथ दिलवानी रहती है चीफ मिनिस्टर के लिए. गवर्नर बेसिकली डिमांड नहीं कर सकता है कि आप पहले हमें 118 MLAs का एक साइन लेटर प्रोड्यूस करिए, हम तभी आपको अलाउ करेंगे ओथ लेने के लिए. Now on this particular point, Sarkaria Commission, which was constituted in 1988, then we have Venkat Chalaiya Commission and the Punchi Commission. All these 3 commissions were related to the interstate relations. Interstate relations को strengthen करने के लिए ये तीनों commissions constitute किए गए थे. And these 3 commissions unanimously recommended one thing, and that was the order of preference. And what is this order of preference? We have discussed it multiple times, so let's give it one more try. कि जब हंग असेंबली होगी, when there is a situation of hung assembly, so what is the order of preference? So the first preference is pre-poll alliance, then single largest party, and the third option is, in this order of preference, the third preference would be post-poll alliance, right? So this is the order of preference which the governor has, right? अब प्री पोल अलायंस के पास में अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस क्या रहता है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी तमिलगा कजिगम, जिनके पास में टोटल सपोर्ट था 107 MLAs का.
तो यहां पर जो एक करेक्ट चीज होती गवर्नर के लिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के लिए, कि उनके पास में जो सबसे करेक्ट डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन वो ले सकते थे, वो क्या होता कि वो तमिलगा वेत्री कजगम के जो लीडर हैं जोसेफ विजय, उनको इनवाइट करते, उनको चीफ मिनिस्टर की ओथ दिलवाते, देन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस Mr. Vijay would prove the majority, or he has to win the confidence of the house by providing the support of 118 MLAs. Now this should have been the proper order, but instead of following this particular order, Mr. Governor, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar, he demanded कि भाई आप पहले हमें 118 MLAs का आप पहले सपोर्ट दिखाइए, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए जिसमें 118 MLAs ने अपना साइन किया हो, सो दैट वी कैन हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, तभी हम आपको अलाउ करेंगे कि आप ओथ ले सकें एज अ चीफ मिनिस्टर. नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, because the set convention will not allow this, right? Because the governor does not have this power कि वो ये डिमांड कर सके भाई कि आप हमको पहले क्या करिए, आप पहले हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेजॉरिटी प्रूफ करिए, बिकॉज मेजॉरिटी हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव की जाती है स्टूडेंट्स, राजभवन में नहीं. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, नाउ द सीक्वेंस हैज बीन ऑनर्ड इन द ब्रीच इन गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड नाउ Tamil Nadu. The breaches have been remarkably one-sided in Goa. So basically multiple examples have been cited where the governor chose not to follow this particular preference. Now the constitutional tests. Now let's talk. So these are the examples which have been cited, and we don't have there is no need to discuss the examples which have been cited. We will discuss the constitutional tests. So the constitutional test has never been the production of signature in advance at Rashtrapati Bhavan or Lok Bhavan. The only testing ground is the floor of the house. A governor continues so long as it has not lost a motion of no confidence. That is the essence of Article 164 Clause 2 and the convention that flows from it. The governors demand that Mr. Vijay produce signed letters from a majority before being sworn in is therefore an invention. No provision of the constitution requires it. No commission has recommended it. No precedent supports it. Anyone who wished to challenge Mr. Vijay's claim was free to bring a motion of no confidence on the floor of the house. The MLAs would then have voted on the record with their constituents watching. That is how parliamentary democracy is supposed to work. Now students, always remember this. This is the most important point that I'll be telling to you, that we are a democracy. Democracy is government by the people, for the people, of the people. So always the elected body has more power, or elected body is given more preference. The governor is the appointed person, it is not the elected body, right? So governor is a ceremonial head of a state, it is not the elected body. So here the authors have clearly suggested one thing, कि जो एक क्लियर ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जो ये चीज आपसे, जो गवर्नर को ये पावर देता हो, दैट गवर्नर कैन डिमांड द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर कैन डिमांड अ डॉक्यूमेंट हैविंग द सिग्नेचर ऑफ द मेजॉरिटी, राइट? कि आप 118 MLAs का, बिकॉज सिंगल लार्जेस्ट मेंबर को आपको इनवाइट करना था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी उसको इनवाइट करना था, चीफ मिनिस्टर का ओथ दिलवाना था. अगर किसी इंसान को ये डाउट था कि जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर क्या होता, नेक्स्ट प्रोसेस होता कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते, और नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन रिकॉर्ड होता, और उस टाइम पर थालापति विजय या जोसेफ विजय को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती. दिस शुड हैव बीन द करेक्ट process, but the governor of Tamil Nadu chose, or the governor of Tamil Nadu invented altogether a very new concept. And what was that new concept? A thing which has never happened in India, कि भाई आप में majority पहले आप राजभवन में प्रूव करिए, floor of the house बात की बात है, right? So this is something which no commission has ever suggested in the Indian history, which
no provision of the Constitution of India talks about. So this is altogether a new thing. And see, conventions are always meant to break. Conventions हमेशा break होने के लिए बने होते हैं. Just like the world records, conventions are always meant to break. But to uphold the convention, it takes a lot of guts to uphold the convention and to follow the convention, right? Because if every governor assumes this power, then the democracy, then the very foundational principles of democracy will be disturbed, right? Then the court has many opportunities, right? In Asa Bommai 1994, Rameshwar Prasad 2006, to lay down the law of gubernatorial. Now what is gubernatorial? So gubernatorial is related to the office of the governor. आप प्लीज इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है, सो आई सजेस्ट कि आप प्लीज इसको याद रखिएगा. द टर्म इज gubernatorial, और gubernatorial आप जो भी प्रोनाउंसिएशन इसका समझें, एंड इट इज रिलेटेड टू दी related to the office of governor, right? Discretion in government formation, it has on each occasion gone part of the way. The time has come to go all the way. Three propositions must be settled. First, the governor's task is to identify the person most likely to command the confidence. He must follow the order of preference set out by the Sarkaria, Venkat Chalaya and Punchi Commission. He has no power to demand pre-swearing in proof of an absolute majority. Second, a minority government, like any other, falls only on the floor of the House. Third, the convention that the first session of a new assembly tests the government's majority in the ordinary course of should be replaced by requiring the opposition to bring in a motion of no confidence if they so desire. Ordering a confidence vote is anathema. So basically, finally, the authors, the senior advocates of the Supreme Court of India have recommended a few things, and these recommendations are of great importance. The first one is that basically कि ये जो order of preference हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर है. ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट सजेशन इज दैट द गवर्नर मस्ट फॉलो दिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. देन द सेकंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द ऑथर्स ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट द गवर्नर हैज नो पावर to demand the proof of majority, because the proof of majority or the confidence of the, or to prove the confidence or to win the confidence no confidence motion, it is something which has to be done on the floor of the House. And the third one is the convention that the first session of new assembly tests the government's majority in the ordinary course should be replaced by requiring the opposition. So basically the convention is that when there is the first सेशन ऑफ द न्यू असेंबली, तो वहां पे गवर्नमेंट को मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है. दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन अ कन्वेंशन. नाउ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग दैट वी शुड रिप्लेस दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन बाय ऑपोजिशन. की ऑपोजिशन अगर चाहे तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये, अगर ये कन्वेंशन है कि हर बार अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. इस कन्वेंशन को इस चीज के साथ में रिप्लेस कर देना चाहिए कि अगर कोई ऑपोजिशन है जिसको लगता है कि दिस पर्टिकुलर पार्टी, इनके पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकते हैं. देन देयर कैन बी अ डिस्कशन ऑन दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बिकॉज दैट डिस्कशन विल गो ऑन द record, right? So this article is all about the powers of the governor and the issue that was created in Tamil Nadu because of the exercise of powers by the governor of Tamil Nadu, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar. The powers which never existed before, the convention which never existed before, the recommendations which never existed before, but all those things were exercised by the governor of Tamil Nadu, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar, right? Now we'll move to the next part. So basically this article is related to the bilateral relations between India and South Korea. So the first important point is that the bilateral relations between, or the diplomatic relations between India and South Korea were established in 1973, and we have maintained good relations with South Korea, and we also have a very important defense ties with South Korea. Now, so recently, or the last month, both state heads met, the Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi and the President of South Korea Jila Myung. Right, they met and they discussed about the defense ties, and they
they talked about a new defense platform or new defense cooperation, and that defense cooperation was known as Kindex. So Kindex, what is Kindex? So Kindex stands for Korea India Defense Accelerator. So अगर आप चाहें तो आप इस एब्रीवेशन को याद रख सकते हैं, काइंडेक्स. काइंडेक्स स्टैंड्स फॉर Korea India Defense Accelerator, and it is a joint strategic defense vision which India and South Korea will follow to strengthen the defense relations. Then we have this similar module. हम ऐसा similar module हमारा बहुत सारे countries के साथ में, United States of America is one of them. Then we have France, जिसके साथ में हमारा एक जो डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है उसको हम फिंडेक्स बोलते हैं. फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में जो उसको इंडेक्स बोलते हैं, राइट. सो बेसिकली हाउ इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन म्यूचुअली कोऑपरेट टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑफ utmost importance, but again this much of discussion is more than enough, right? Because every discussion that we will be having during this session will be purely based as per the demand of your examination, because see, once you are in your college, right, because the main objective of this particular session is to help you in cracking the examination. Now this article in the text and context section is again related to the same provisions that we have already discussed in the first article of the editorial section, that is the powers related to the office of governor, whether the governor of any particular state holds the discretion to demand the letter of support from the upcoming chief minister, because the set constitutional convention is that the majority has always to be proven on the floor of the house. The governor doesn't hold this power. The governor has only one thing: after the elections were held or after the elections are convened, that is the power, that is the provision of article 164 clause 1. And what is article 164 clause 1? Article 164 clause 1 makes one thing absolutely clear, that the chief minister of a state shall be appointed by the governor of the state, and also the cabinet minister shall also be appointed by the governor of the states as per the suggestions of the chief minister of the state. तो ये कन्वेंशन तो कल फॉलो हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो कल फॉलो हुआ. पहले थालापति विजय या जोसेफ विजय ने पहले ओथ ली, और उनके ओथ लेने के बाद में 8 other cabinet ministers were administered oath by the governor of that state, right? Then we have already seen these recommendations of Sarkaria Commission, Punchi Commission and Venkat Chalaiya Commission. हम already वो order of preference we have discussed each and everything, so there is no need to discuss about this particular provision. Then also the case of Esa Bomai we have already discussed, and also the case of Rameswar Prasad we have already discussed, so there is no need to repeat all these things. And in the last 5 to 6 days, from 5th of May 2026 till 9th of May 2026, we have discussed a lot of things related to the powers of the governor and the situation in Tamil Nadu, right students? So there is no need to worry about. कोई ऐसा लोड लेने वाला जरूरत नहीं है, लोड लेने की आपको एकदम जरूरत नहीं है. जहाँ पे लोड लेने की बात आएगी मैं बता दूंगा आपको कि हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर लोड लेना है, तो थोड़ा सा आप लोड ले लीजिएगा. बट अगेन नथिंग रेलेवेंट मनी वाइज, तो आई गेस it's not. Now how Indian IT majors are decoding artificial intelligence. So now this is something which is very important, and this is something that we have to understand, that just give me a minute now. This is so this year from 16th to 20th of February 2026, India hosted the 4th edition of AI Summit, and it was termed as AI Impact Summit. The summit took place at Bharat Mandapam, New Delhi, and during this summit we also adopted a New Delhi Declaration. So after this AI Impact Summit was convened, now you don't have to remember about that Galgotia wala thing, that entire Galgotia issue which was which happened, the conundrum. So you don't have to remember this, but now this article is focusing on
one important thing, so basically India has always been a coding hub, IT hub रहा है हमेशा से. हम बहुत सारी IT services provide करते थे for different companies. We used to provide these IT services to various companies all around the world. But after this entire thing called artificial intelligence came into existence, तो उसका impact हमारी companies पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, because the reason is one thing which artificial intelligence have cracked, वो है कोडिंग. सो किस तरीके से इंडियन आईटी सेक्टर्स जो हैं, जो टीसीएस जैसी जो फर्म्स हैं, या विप्रो जो हो गया, ये सारी फर्म्स जो हैं वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेंगी ऑन द IT sector, right? Then we have international section. Iran responds to US proposal as drone targets Gulf nations. So now this is very sad that the war which was started by United States of America and Israel, now the price is paid by these Middle Eastern countries, and most importantly United Arab of Emirates, because United Arab of Emirates is one such country जिस पे बहुत ज़्यादा impact पड़ा इस war का. Continuously ईरान टारगेट कर रहा है थ्रू ड्रोन्स एंड वेरियस बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो अब एक नया प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया. अब ईरान ने उसका एक रिस्पॉन्ड भी दिया. ईरान का रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली क्लियर. ईरान इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन वन पॉइंट, दैट इफ यू वांट to stop this war, then this war should stop at all fronts, on all fronts. फिर वो इजराइल जो लेबनान पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा नेगोशिएटिंग पॉइंट है वो यही है कि जब भी हम वॉर एंड करने की बात करेंगे, तो जब तक लेबनान में आप वॉर रुकवाने का प्रॉमिस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरीके का पीस नेगोशिएशन हम आपके साथ में नहीं कर सकते हैं. एंड द रीजन इज, अभी मैं बहुत सिंपल प्लेन वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि वाई ईरान इज डिमांडिंग अ सीज फायर इन लेबनान. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देर इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, हिजबुल्लाह. अब लेबनान और इजराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि ईरान और इजराइल बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं. सो ईरान ने क्या किया, ईरान ने हिजबुल्लाह को क्रिएट किया लेबनान में. ठीक है. सो लेबनान से बेसिकली क्या है कि अगर आपने हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ग्रुप आपने क्रिएट कर दिया लेबनान में, जो डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ में. अब जो सदर्न लेबनान का पार्ट है, सो बेसिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू द मैप. सो बेसिकली ये जो सदर्न लेबनान का पार्ट है, ये यहाँ पर एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं लितानी रिवर. अब जो ये सदर्न लेबनान है, यहां से डायरेक्ट ये इजराइल के साथ में बॉर्डर शेयर होता है. जो ये सदर्न लेबनान है, हिजबुल्लाह यहीं से ऑपरेट करता है, सदर्न लेबनान से. सो रिसेंटली क्या हुआ कि इजराइल ने ये जो लितानी रिवर पे जितने सारे ब्रिज थे, इनको डिस्ट्रॉय करके जो एक्सेस था उसको प्योरली खत्म कर दिया. और ऐसा किस लिए किया गया, ताकि जो हिजबुल्लाह है उसके नेटवर्क को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सके. और यहाँ पे बहुत सारी चेक पोस्ट लगा करके वहां पे इजराइल का जो फ्लैग था वो हॉइस्ट कर दिया गया. सो रीजन यही है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर लेबनान में ये वॉर जो अभी चल रहा है, जो लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये नहीं रुकता है, तो इजराइल विल प्योरली डिसमेंटल हिजबुल्लाह. हमास ऑलरेडी गाजा पीस बोर्ड जब क्रिएट हुआ लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में, तो हमास ऑलरेडी डिसआर्म हो चुका है, एंड इट इज कंप्लीटली वैनिश्ड एज ऑफ नाउ. लास्ट 6 to 7 मंथ्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है हमास की तरफ से. हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीस तीनों प्रॉक्सी को क्रिएट किसने किया, ईरान ने. हमास ऑलरेडी डिसआर्म हो चुका है. हिजबुल्लाह पे कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा है इजराइल, इसीलिए लेबनान में वो सीज फायर चाह रहा है. वो लेबनान के इंटरेस्ट के लिए नहीं है वहां पे कुछ भी ईरान की तरफ से. वहां पे किस इंटरेस्ट के लिए, वहां पर इंटरेस्ट है पूरा का पूरा ईरान का, क्योंकि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के थ्रू क्या करता है, इजराइल में बहुत सारे अटैक्स वगैरह करवाता है. राइट. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. नाउ, so now during the Victory Day parade, Vladimir Putin has suggested that this war that is taking place between Ukraine and Russia will not go on for a very indefinite period of time. This war will stop, or this war will end soon, but countries has to give more efforts to end this particular war. अब हंता वायरस जो इतना डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स, हंता वायरस में आप लोग एक चीज याद रखिएगा, शिप का नाम क्या था, उस क्रूज शिप का नाम जरूर आप याद रखिएगा, MV हॉन्डियस. राइट. प्लीज आप इस क्रूज शिप का नाम जरूर याद रखिएगा. दिस क्रूज शिप इज बेसिकली द मेन पॉइंट जहां से ये पूरा का पूरा हंता वायरस का जो कॉन्ड्रम है या जो डिजीज है वो वहीं से स्टार्ट हुआ है.
Patient Zero was at this particular ship only. Then in the sports section, Indian archery team, Indian women archery team, recurve gold मिला है, right, and this World Cup, archery World Cup was taking place at in Shanghai, जहाँ पे हमारी Indian women's team है, जो women team है, they have won the World Archery Championship and they secured a gold medal. Now we'll move to the interesting section of this particular discussion, and I was very excited that we will have this discussion. So let's switch to the question answer part of today's newspaper. So yeah. So from today onwards, every day, we'll solve a few questions. So today we have a very interesting topic, जिसके questions हम discuss कर रहे हैं, and this is basically related to 150 years of Vande Mataram. राइट, सो 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इस बार का रिपब्लिक डे परेड था उसका भी थीम क्या था, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम. देन अ वीक अगो द इंडियन गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट हैज अमेंडेड नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971. और अब अगर कोई वंदे मातरम के टाइम पे खड़ा नहीं होता है या गाता नहीं है उसको, या अगर कोई जो गा रहा है उसको डिस्टर्ब करता है, तो इट इज अ पीनल ऑफेंस नाउ, राइट, उसको पनिशमेंट मिलेगी. So when will the conflict end? No one knows when will the conflict end, because that's something which remains so uncertain, right? But coming back to this discussion, so we have 8 questions from this particular topic, and we'll solve each and every question, and every day we'll try to solve one passage. तो हम almost अगर हम ये particular practice करते रहते हैं, और याद रखिएगा कि क्लैट 2026 में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस नहीं थे या जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस नहीं थे, बट उसके पहले कंसोर्शियम ऑफ एनालियूज ने पूछे हैं क्वेश्चंस, राइट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा गया है, राइट. तो 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम में स्टैटिक से रिलेटेड भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए क्लैट के लिए और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, राइट. सो दिस इज योर पैसेज, एंड दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वेबसाइट का नाम है अभी I'll try to speak like Mamata Banerjee, https:// then //amritcall.nic.in/vande-mataram, right. अमृत काल की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया इस particular passage को, right. So let's start with the discussion now. So we have like, and I strongly believe that this is going to be one of the most anticipated topic for CLAT, because it has a lot of facts related to the history of India. So this is the first question. I hope it is clearly visible to you. So regarding the formal adoption of Vande Mataram as the national song, which of the following statements is historically accurate according to the provided text? Getting my question, or getting the question? Regarding the formal adoption of Vande Mataram as the national song, which of the following statements is historically accurate according to the provided text? So these are your 4 options. It was formally adopted through a legislative resolution passed by the Lok Sabha in 1950. It was adopted via formal statement by Dr. Rajendra Prasad in the Constituent Assembly on 24th of January 1950. It was incorporated into the Constitution of India under Article 51AA during the 1949 drafting. And last option, it was declared the national song by Jawaharlal Nehru during the first Republic Day parade in 1950. So these are your 4 options for question number 1. You have to answer which is the most accurate statement. Right. So please फटाफट आप बता दीजिए which is the most accurate option. And you have to like this video every day. If you're watching this video, you have to like it. That is something, we have a deal now. I guess we have a deal on this particular thing, that if you're watching this video, you have to give it a like. Right. So come on. This is the question. Which is the most accurate statement? Okay, we have the first answer, and the first option, the first answer that we have is option C. Okay, Palak, option C. It was incorporated into the Constitution of India under Article 51AA during the 1949 drafting. So for question number 1, the correct option is option B. This is the most accurate statement. And why
ऑप्शन बी इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, क्योंकि आर्टिकल 51 इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिस्कशन चल रहा था तब फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. इट वाज लेटर इंसर्टेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देन द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज फॉर्मली adopted through a legislative resolution passed by the Lok Sabha in 1950. It is also inaccurate because before the idea of Lok Sabha came into existence, Vande Mataram was adopted, right? Vande Mataram was adopted as a national song, right? So this is also not correct. Now, when we talk about option D, it was declared the national song by Jawaharlal Nehru. It is also wrong. Correct option is option B. On 24th of January 1950, Dr. Rajendra Prasad approved that Vande Mataram is going to be the national song. So option B is the most accurate one. Now we'll move to the next option or question number 2. In 1937, the Congress Working Committee CWC made a significant decision regarding the rendition of Vande Mataram. What was the primary reason for truncating the song to its first 2 stanzas, right? So basically, let me tell you one important fact related to question number 2. पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इस फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे. To ensure the song's duration matched the musical timing of the national anthem, because the latter stanzas were written in Bengali, which was less understood than Sanskrit, to address objections from minority groups regarding the invocation of Hindu goddesses, on the recommendation of the British administration to reduce the song's revolutionary length. So for question number 2, which is the most accurate option for question number 2? Anyone? For question number 2, which is the most accurate option? What was the reason why the Congress Working Committee limited the length of the Indian national songs to 2 stanzas only? Anyone? Question number 2. So for question number 2, the correct option is the Congress Working Committee in 1937. Basically, उन्होंने क्यों सिर्फ 2 stanzas तक लिमिट किया था? Because of the reason to address objections from minority groups regarding the invocation of Hindu goddesses, right? So basically, जो हमारा national song है, it has total 6 stanzas, और 1937 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले 2 स्टैंजास सिर्फ इसीलिए अप्रूव किए थे क्योंकि जो बाकी के 4 स्टैंजास हैं, आउट ऑफ 6 स्टैंजास, जो लास्ट के 4 स्टैंजास हैं, उसमें थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया जाता है हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को. तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, उनका ये एक ऑब्जेक्शन था दैट हाउ you can force us to sing a song which is about the glorification of the Hindu gods and goddesses, right? So this was the reason. So now we'll move to question number 3. The 150th anniversary of Vande Mataram is officially commemorated based on which specific historical milestone? So basically 150th anniversary जो हमने celebrate किया last year, वो किस historical milestone पे based है? So the first one is the publication of the novel Anand Math in 1982. B, the first public singing of the hymn by Rabindranath Tagore in 1896. Third option is the composition of the poem by Bankim Chandra Chattopadhyay on 7th November 1875. And the last option is the first use of the song as political slogan during the anti-partition movement in 1905. So you have to tell me that which is the historical milestone जिसके basis पर हम 150 years वंदे मातरम के celebrate कर रहे हैं. It's very easy question. On a scale of 1 to 10, it is like 10, easy side में. It is absolutely correct, option C, because 2025 से अगर आप 150 years back जाएंगे तो 1875 ही सबसे fit year बैठ रहा है. तो उस logic से भी, and on 7th of November 1875 the composition of the poem was made by Bankim Chandra Chattopadhyay, right? So for question number 3, the correct option is option C. Then we will move to the next question, question number 4 now. According to the 2026 Ministry of Home Affairs guidelines and proposed legal amendments, which of the following is true regarding the protocol for Vande Mataram? So in January 2026, the Ministry of Home Affairs released a notification and made it absolutely clear that now it is mandatory to sing the national song during any official event. इसीलिए आप अगर कल किसी ने जोसेफ विजय की अगर ओथ सेरेमनी अगर किसी ने विटनेस किए, then it was started with singing of national song followed by national anthem and the state song. तो ये कल पूरा 6 stanzas कल गाए गए, right? So
Which of the following is true regarding the protocol for Vande Mataram? Standing is mandatory even when the song is played within a newsreel or documentary. Option B, the national anthem Jana Gana Man must always be performed before the national song at ceremonial events. Option C, insulting the national song is already a punishable offense under the original 1971 Act. And this is, यहाँ पे जो 1971 वाला एक्ट लिखा है, कौन सा एक्ट है? National Honors Act of 1971. And option D, all 6 stanzas totaling 3 minutes 10 seconds are mandatory for specific formal state functions. Question number 4. Question number 4 has which of the following is true regarding the protocol for Vande Mataram? Anyone? Question number 4. We are getting the answers now. C. Okay, we have the first answer C. Okay, right. Anyone else who would like to answer question number 4? Please answer question number 4. So for question number 4, students, the correct option is option D. अब ऑप्शन डी में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने है. प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन. जो 6 स्टैंजाज हैं वंदे मातरम को, उसके गाने के लिए जो टोटल टाइम एलोकेट किया गया दैट इज 190 सेकेंड्स, 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स. और जो नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये मई 2026 में अलग से अमेंडमेंट किया गया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस थी ये जनवरी 2026 में इशू की गई थी. राइट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच हिस्टोरिकल फिगर इज क्रेडिटेड विद रेजिंग एन इंडियन फ्लैग in Stuttgart, Germany that featured the words Vande Mataram? Now question number 5 is very interesting. Which historical figure is credited with raising an Indian flag in Stuttgart, Germany that featured the words Vande Mataram? Madanlal Dhingra, option B Madam Bikaji Kama, option C Bipin Chandra Pal, and option D Lala Lajpat Rai. ठीक है. अब अभी देखिए, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, एंड कंसोर्शियम ऑफ एनालिसिस इज वेरी फेमस फॉर दिस. एक तो क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट हो, जैसे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 डिफिकल्टी लेवल इज 10. और दूसरा कि कोई बहुत वेग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए. राइट. जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया गया अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो सोल सर्वाइवर था उसका सिटीजनशिप पूछ लिया. राइट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, किसने रेस किया था इंडियन फ्लैग? So for question number 5, students, the correct option is Madam Bikaji Kama. She unfurled the tricolor in 1907 at Stuttgart, Germany. और उस झंडे पे क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम. So please remember this question. This is also very important. Now 2 साल, पिछले साल बस स्टैटिक जीके से सवाल नहीं आया, उसके पहले स्टैटिक जीके से हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा. So my suggestion would be for static GK. ये आपके लिए वंदे मातरम 150 years of वंदे मातरम is very important. Now we'll move to question number 6. The text mentions Vande Mataram movement involving student-led protest and expulsions in the Hyderabad, Karnataka region. In which year did the movement occur? Question number 6. The text mentions the Vande Mataram movement involving student-led protest and expulsions in the Hyderabad, Karnataka region. In which year did the movement occur? 1905, 1920, 1938 and 1947. कॉमन सेंस और लॉजिक का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन ट्राई टू टेक अ गेस? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. 1938 में ये हुआ था, और जब 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद वंदे मातरम मूवमेंट वाला जो पूरा इशू है वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन में हुआ था. देन नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द सॉन्ग्स हिस्ट्री. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज टू फीड एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन थ्रू दीज क्वेश्चंस. राइट. कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हम फीड कर सकते हैं, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो दीज आर योर 4 स्टेटमेंट्स. पब्लिकेशन ऑफ द नॉवेल आनंद मठ. Statement 2, first broadcast of All India Radio Dharwad starting with Vande Mataram. Then statement 3, launch of the English daily Vande Mataram by Bipin Chandra Pal. And statement 4, adoption of the song for All India Congress occasions at the Varanasi session. So these are 4 statements for question number 7. So publication of novel Anand Math सबसे पहला chronological order में आएगा, ये 1882 में हुआ था. Then first broadcast of All India Radio Dharwad starting with Vande Mataram. So ये बेसिकली कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1950 में. राइट.
तीसरा स्टेटमेंट है लॉन्च ऑफ द इंग्लिश डेली वंदे मातरम। सो ये हुआ था 1906 में। अडॉप्शन ऑफ द सॉन्ग फॉर ऑल इंडिया कांग्रेस ओकेजन एट द वाराणसी सेशन, स्टेटमेंट 4, ये हुआ था 1905 में। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम इसको देखें, स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट 1 4 3 2। सो व्हाट इज द 1 4 3 2? सो अब हमें ये देखना है कि 1 4 3 2 किस पर्टिकुलर ऑप्शन में फॉलो हुआ है। 1 4 3 2, so 1 4 3 2 is option A. So for question number 7 the correct option is option A. Now we'll move to the next important question related to 150 years of Vande Mataram, students, and this is who composed the specific musical version of Vande Mataram? Who composed the specific musical version of Vande Mataram based on the raga Desh Malhar, which was the later performed at 1896 कांग्रेस सेशन? अब देखिए इसमें दो तीन चीजें हम लोगों को पता चल गई। सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी कि सबसे पहली बार पब्लिकली कब गाया गया था नेशनल सॉन्ग को। सो इट वाज सung by रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896 ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कोलकाता, राइट। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस। अब सबसे पहली बार किस राग में गाया गया था? तो राग देश मल्हार राग में गाया गया था। ये भी अगर आप याद रखना चाहें, बहुत वेग इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ ली गई तो आप उसके लिए आप रेडी कर सकते हैं। देश मल्हार राग में गाया गया था। अब किसने गाया था? जदुनाथ भट्टाचार्य, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरला देवी चौधरानी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 4 ऑप्शंस। किसने राग मल्हार में 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया था वंदे मातरम को? मैंने अभी आप लोग को डिस्कशन में ही थोड़ा सा आंसर्स का हिंट दे दिया, तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं विच इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स नाउ। Question number 8. So for question number 8, the correct answer or the correct option is option D, Rabindranath Tagore, right? So yeah, this is all about today's analysis session, and if you have loved this analysis session, right, so please do like the video and drop your response to this particular session in the comment section. Second important thing, we'll start this session every day at 7:50, and every session will be followed by analysis session, will be followed by a passage based discussion. अगर पैसेज बेस्ड डिस्कशन के साथ साथ में हम कभी एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उसके बेसिस पे भी हम या उसके पैटर्न पर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। विल कीप आवरसेल्फ, अगर आप लोगों ने इसको रेगुलरली फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप हर महीने ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस सेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। मतलब आप जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पे आप हर महीने 20 to 25 पैसेजेस सॉल्व करेंगे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 सेक्शनल टेस्ट, राइट। तो अगर आप सिर्फ एनालिसिस सेशन रोज अटेंड करेंगे तो आप एक ठीक ठाक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। सो माय सजेशन वुड बी कि प्लीज डू अटेंड दीज सेशंस, एंड ऑन दैट नोट we'll wrap up today's session. Thank you so much guys. We'll see you tomorrow at the same time. Morning 7:50. We'll say good morning to each other at 7:50 every day from Monday to Saturday, right? So but a question, sir. Yes, please, please, you can ask your question. You can ask your question now. I have a question about me. What about? My name is Abhay Singh. Oh, that's the question. My name is Abhay Singh, right? So with this, we'll wrap up today's session. Thank you so much, guys. We'll see you tomorrow at the same time at 7:50 in the morning. And yeah, thank you so much. Keep on revising things. Stay confident. Stay hydrated. And yeah, bye. Bye. See you tomorrow. Bye, everyone.